बेंगलुरु के मशहूर शिफा अस्पताल में यौम आज़ादी का जश्न। शिफा अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सों, शिफा इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी और दीगर स्टाफ ने मिलकर 79th इंडिपेंडेंस डे शानदार पैमाने पर मनाया। शिफा अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स डॉक्टर परमिला गुप्ता और डॉक्टर सायरा ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर डॉक्टर मुश्ताक अहमद, डॉक्टर अल्ताफ अहमद व दीगर मौजूद थे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। परचम कुशाई और कौमी तराने के बाद शिफा अस्पताल के वसी हाल में जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़द हुई। इस मौके पर शिफा नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सों के स्टूडेंट्स ने कन्नड़ा, उर्दू, अंग्रेजी जबानों में यौम आज़ादी के मौजू पर तकरीरें की। इस जश्न के मौके पर शिफा अस्पताल ने दिनों रात खिदमत अंजाम देने वाले अपने स्टाफ के चंद मेंबरों को तहनीत पेश की। मेमेंटोस पेश करते हुए स्टाफ की हौसला अफजाई की। शिफा अस्पताल के रूहे रवां डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि मंजिल तक पहुंचने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए खुलूस, सिंसियरिटी जरूरी है। डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने शिफा अस्पताल की तरक्की के लिए उठाए गए इक़दामात का तज़किरा किया। डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए वॉइसलेस, पेपरलेस और अस्पताल में आने वाले हर शख्स को रेस्पेक्ट, सेटिस्फैक्शन हासिल हो, इस जानिब तवज्जो दी जाएगी। शिफा अस्पताल ओबीजी डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर परमिला गुप्ता, डॉक्टर सायरा व दीगर ने जश्न आज़ादी के मौजू पर खिताब किया। 79th इंडिपेंडेंस डे की चीफ गेस्ट प्रोफेसर एनवी वैजयंती थी, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ पाई, तो शिफा अस्पताल की टीम ने उनके घर पहुंचकर उन्हें फेलिसिटेट किया। यौम आज़ादी की खुशी के मौके पर शिफा अस्पताल ने अपने मरीजों की सहूलत के लिए रिदा कार्ड की फैसिलिटी दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। इस 79th इंडिपेंडेंस डे की एक और ख़ास बात ये रही कि शिफा अस्पताल के डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने पिछले माह यानी 9 जुलाई 2025 को लंदन की रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन के प्रेसिडेंट से बावकार प्रेस्टिजियस फेलोशिप हासिल की है। इस बड़ी कामयाबी पर पूरा शिफा अस्पताल उठ खड़े होकर डॉक्टर अल्ताफ को स्टैंडिंग ओवेशन पेश किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। 9 July, Dr. Altaf received the prestigious FRCP London from the Royal College of the recognition reserved for physicians who demonstrate excellence in education, experience in rigorous examination and dedication to advancing medical practice. On this Independence Day, Shifaa family extend its heartfelt congratulations to Dr. Altaf Ahmad for his global recognition and the Shifaa Hospital for being a beacon of the hope and healing. Let us start and give a standing ovation to Dr. Altaf and request Dr. Altaf to come. At least we'll see who is Altaf. Dr. Altaf, please come here. Thank you very much. This actually fellowship is dedicated to Shifaa team.
Yeah. So nothing actually is much like is not my goal. Shifaa team led by Dr. Vikas Saab, his heart, dedicated work. It was a wonderful team. Manta himself. And now we are taking this chance. Everybody has played a role. This actually FRCP is dedicated to this actually the people who are worked with us for more than 20 years tirelessly and mashallah they are part of the team. Jazakallah. तो खैर भाई जो है इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, हम भी समझेंगे भैया भाई हम लोगों को खोज तक पहुंचना है, फॉग है। अब भाई जो है हमारी मंजिल बहुत करीब है, हम क्या करेंगे भाई जो है फॉग कम से कम अंदाजा लगाएंगे, इतना हमारा जो है सिविक सेंस होगा, कॉमन सेंस होगा। पहले मंजिल है, मंजिल जो है इतने जो है भाई जो मैं खुद जो है भाई मेरा माइंड मस्ट है जो 3 किलोमीटर अवे, जो 2 किलोमीटर अवे। किसी शायर ने कहा मंजिल नुमा के लिए इखलास शर्त है, फिर रहबरी कर लेगी मंजिल कदम कदम। क्या मतलब, इफ यू आर सिंसियरली खुद मंजिल बोलेगी टेक ए राइट टर्न, टेक ए लेफ्ट टर्न, खुद मंजिल बोलेगी, खुद गोल बोलेगा यू जस्ट 3 किलोमीटर अवे, नाउ यू जस्ट 1 किलोमीटर अवे। आपको जो नजर नहीं आ रहा होगा बल्कि योर जो है दिमाग बोलेगा इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, नहीं तो जो है वो करके जो है क्या करेंगे। और एवरीथिंग जो है या तो जैसा यू आर विद अस और नॉट विद अस, यू आर विद अस और नॉट विद अस, ये जो है अगर गोल में आदमी तय करे कि आई एम विद द गोल और नॉट विद द गोल। भाई पैसे कमाना है तो बहुत सारे ऐसे आसान रास्ते हैं, आजकल वर्चुअल ऑफिस है, फोन रख ले को जरा सेट अप फिरा लिया तो लाखों रुपए मिल जाए। उन्होंने जो है जा क्या हो गए, पहले एक जमाने में दलालान थे, ब्रोकरान थे, पहले शाम को जो है जमा रात को नंग था, उसके बाद क्या हुआ रियल एस्टेट ब्रोकर्स बने, रियल एस्टेट भाई एजेंट्स बने, अब कंसल्टेंट्स बन गया, यानी डेवलपर नाम बदला ले। पैसा कमाना असल नहीं है। हम अगर जो इरादा करें कि गोइंग टू लीव ए हॉस्पिटल, जिसमें जो है चंद इरादे किए हैं, तो भाई जो एक तो वॉइसलेस पेपरलेस वॉइसलेस हॉस्पिटल, चिल्लाना चिल्लाना हर चीज में जो है इंशाल्लाह राइट फ्रॉम कहाँ से फोन जो है जहाँ से जी माशाल्लाह रिसीव करते हैं भाई जो है जो सिक्योरिटी वार्ड बॉयज डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स इंशाल्लाह जो इशारों से बात करेंगे इंशाल्लाह। विल मेक इट एज ए वॉइसलेस हॉस्पिटल। Next, we'll go to make it as a paperless hospital. Third, we'll make it जो है where by जो है people are respected, where जो है जी no one is disrespected। ऐसी हॉस्पिटल बनाएंगे, हर एक आदमी जो है इज्जत के साथ आकर, जिसके पास पैसे हो ना हो परेशान हो, हर एक को जो है रिस्पेक्ट से देखेंगे और जो है उसको इंशाल्लाह उसमें जो है रिदा कार्ड इंशाल्लाह बिफोर वी कंक्लूड चाइस्ता विल टेल यू इंशाल्लाह 2-4 minutes व्हाट इज रिदा कार्ड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इंशाल्लाह करके। तो अभी जो है वी हैव स्टार्टेड, ending जो है सस्पेंड किए थे एंड वी थॉट इज राइट एंड एट मोमेंट व्हेन वी हैव रीस्टार्टेड। ठीक है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है उसके लिए मेहनत करना है, बाकी इंशाल्लाह और टू डॉक्टर शाइस्ता नेक्स्ट टाइम विल सी यू, जज़ाकल्लाह खैर। Wish you all a very happy 79th Independence Day. We remember gratefully the self-efforts made unitedly by everyone. It is not by few people. This could be achieved by contribution of each and every country, irrespective of caste, creed, religion, language, and the reason to which they belonged. Even no sexual differences, even females, housewives also contributed in achieving that biggest goal which we have achieved. But there was a goal in front of us to make India independent. So we have assembled here to celebrate the spirit of unity and dedication to achieve that goal which we plan to achieve independence. It is essential to be very, very strictly guided by the same patriotic values and regain the ancient wisdom and glory which our country has achieved. Together, let us work to become united and strong India. We can also thereby set an example that will help so many other countries of the world to imbibe our ideals for their progress and development, and dedication to achieve the goal can help to achieve the goal and mission and vision of Shifaa Hospital management
which wants universal health and education, especially to the low and middle socio-economic group. In that direction, the Department of Obstetric Gynecology has providing today onward facility of Rida card for those people so that we can serve those who are underprivileged or we can help them. So from today onward, on a subsidized rate, to fulfill the mission and vision of Shifaa Hospital, we are introducing Rida card in Shifaa on a subsidized rate. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Shifaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning to all of you. I am standing here on behalf of Madam Dr. Vaijayanti, who had been invited today as chief guest, but couldn't make it to the function because of ill health and mobility issues. Madam Dr. Vaijayanti has had an illustrious career in the field of obstetrics and gynecology and had worked in various capacities in the government medical colleges of Bangalore, Mysore, Hubli and Bellary. And she retired as the HOD of the Department of OPG of St. Martha's Hospital, which is the South Zone Regional Center for DNB administrative purposes. I had the honor and privilege of being one of her students, for which I shall be eternally thankful. By the grace of Almighty Allah and through the efforts of the management of Shifaa Hospital, aided by Dr. Vaijayanti's inputs, the Department of OPG at Shifaa Hospital successfully underwent accreditation by the DNB board, and our DNB program in OPG commenced in 2009. Before that, from 1996 onwards, our department was fully functional under the guidance of Dr. Zarina Mekri Madam, and we had very good input of patients, and gradually we progressed. After the accreditation of our department, Dr. Vaijayanti Madam was the HOD till 2012, and the department has now progressed by leaps and bounds under the able stewardship of our present HOD, Dr. Pramila Madam, backed ably by Dr. Parveen, Dr. Shaista, and with the unconditional support by the administration of Shifaa Hospital, headed by Dr. Mushtaq Ahmed sir. Since Dr. Vaijayanti Madam couldn't come personally to this August gathering, she has forwarded a message which I shall read out. Dear colleagues and friends, happy Independence Day to all of you. Wishing everyone gathered here a day filled with pride, unity, and gratitude for the freedom we enjoy. Please accept my sincere apologies for having absented myself from the Independence Day celebrations at Shifaa Hospital today. Shifaa Hospital holds a special place in my heart as I have seen it grow from a fledgling to a well-organized institution. I congratulate all the individuals of Shifaa Hospital, right from the security person, the staff, and the doctors, right up to the directors, for this massive development which has benefited the society immensely. On the occasion of the 79th Independence Day of our great country, let us all remember the immense struggle and sacrifices of our freedom fighters and heroes. Freedom was fought for and gained at a great cost, and hence it cannot be frittered away. But we must understand that with freedom come responsibilities. We talk of rights, but who is talking of responsibilities? So it is time that we shift our perspective. It is time that we shift our perspective from one of entitlement to that of civic responsibility. As the famous quote from John F. Kennedy's speech goes, ask not what the country can do for you, ask what you can do for your country. The task of nation building does not rest on one or two shoulders.
It is the collective responsibility of every citizen of this country. So also is the building of any institution. Each and every individual working here has a responsibility, his or her own responsibility to fulfill. So, my dear colleagues and friends, let us mark this occasion to rededicate ourselves for the service of our country towards the upliftment of mankind, to eradicate suffering and make this world a better place to live in. May our nation continue to grow stronger, brighter, and more prosperous with each passing year. May India's tricolor always fly high and inspire us to work for a better tomorrow. Let's dream big and build a nation worthy of our freedom. And in Pandit Jawaharlal Nehru's words, continue our tryst with destiny. Happy Independence Day to all of you. Thank you. Attending school, Independence Day, and the sacrifice of the heroes who have given this freedom to us goes without saying. And we will be always indebted to them, and we should always remember their sacrifices. But it's also important to ponder that what we as citizens should also do towards this country. When I came to Shifaa and the way I saw here every year, Independence Day being celebrated with enthusiasm, dedication, and giving priority to underprivileged and those who have been backbone of this hospital, who have worked from the day one, and I have seen that always they're being encouraged, and this is something unprecedented. I hats off to the administration for doing all this. I came here, few hours on the request of Dr. Mushtaq, but seeing the atmosphere here, their sincerity, their dedication towards mankind, underprivileged, poor people, it gave me a motivation to continue whatever little I can do here. I did not have big degrees, but I had a good experience of some 30 years in neonatology and pediatrics. And when I came here, there was no department. With the help of Dr. Mushtaq and others, we tried to give it a shape, and everywhere we try to improve. The moment we improve and we get a setback of stability of the staff is not there. That is what we are lacking, and we cannot give 100% and what it should have in here. What was my dream that by now we should have DNB and we should have all level 3 neonatal treatment, so that the poor people don't have to suffer and go to this private hospital where they skin them. It's very, very depressing, frustrating to see patients suffering for financial reasons, and we cannot give them 100% here. And but many things have come up. Things are taking shape. We have now a very good NICU is coming up, and in a couple of weeks it should be fully operational. And we are trying our best to get some staff who could stay with us few years. In the form of consultants, pediatric consultants who are a bit dedicated and who think of underprivileged people and work with it, because the Shifaa is not a place to make money. I am very clear about it, and everybody else who works here. It is a mission, it is a dedication, it is feeling for the poor and underprivileged people to help them in some way. So I think, we can improve upon that, try to do the best we can do. And they're talking. I thank all the administration, Dr. Mushtaq, Dr. Altaf, everybody else, and we wish and hope their support in bringing pediatric department, in a better shape, so that we can give 100%, treatment to the newborns, which our obstetric department works very hard to give it to us, and they expect us to be able to treat all of them here. That is our main hurdle so far. We are not been able to do it 100%, but we hope in the future this thing can be overcome by hard work, by cooperation of all the staff, all Shifaa people. And one day, we'll have, who knows, we have a full-fledged pediatric hospital in this hospital. That is the dream of Dr. Mushtaq, a separate pediatric hospital.
So my good wishes and happy independence to everybody. And thank you very much. To all of us, to all of you, today is the 79th Independence Day. We have been celebrating Independence Day every year to commemorate our predecessors who have worked hard, who have given away their lives for independent India. We all know that the British rule was there for 200 years. To get independence from this was very difficult. Well, they have all sacrificed their lives, and now we, as doctors, we also need to work for the country, work for the community, work for the society. We are all blessed to be healthcare workers. We need to work in the right direction to achieve our goals. The buzzword today is AI. AI cannot take over everything. Humanity, empathy, and sympathy is always there for us. We have to work hard on how we could help our people and the community, because health is the priority. So with this, I would like to welcome all the consultants here. The core strength of any hospital is the consultants. We are grateful to you all. The backbone of any hospital is the nursing staff and the other staff who work for the hospital, the people who work behind the screen, and all the staff who are here. We are grateful to you all. We would like to welcome on this occasion. It's a very happy occasion. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 1947ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯಿತು. ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗ, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅನೇಕ ವೀರರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರ ಬಲಿದಾನ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಿಸ್ತು, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏಕ್ಯತೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕರು ನಿಷ್ಠ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಸೇನೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. और मेरे अजीज साथियों, मैं फिजा इमाम दर्जा बीएससी फर्स्ट ईयर की तालिबे इल्म हूँ। आज हम सब यहाँ एक खास और तारीखी दिन मनाने के लिए जमा हुए हैं, यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त। यह वह दिन है जब हिंदुस्तान ने 200 साल गुलामी से आज़ादी हासिल की, जब हमारे बुजुर्गों, हमारे रहनुमाओं और लाखों लोगों ने, शहीदों ने अपनी जानों का नजराना देकर हमें आज़ादी का ये सूरज दिखाया। हमें ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली, उसके पीछे कुर्बानियों की एक तवील दास्तान है। क्या हमने कभी सोचा है कि भगत सिंह क्यों फांसी पे चढ़ गए, अशफाकुल्लाह खान ने जान क्यों दे दी, बेगम हजरत महल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, इन सब का क्या ख्वाब था। आज़ादी का जोश दिलों में जगाना है, आज फिर से इतिहास दोहराना है। आज़ादी का जोश दिलों में जगाना है, आज फिर से इतिहास दोहराना है। खून देकर यह आज़ादी पाई है, इसको अपने कर्मों से सजाना है। उनका ख्वाब था एक ऐसा आज़ाद हिंदुस्तान जहाँ नफरत न हो, हर मजहब को इज्जत दी जाए, जहाँ तालीम, इंसाफ और रोजगार सबको मिले, जहाँ नारे न हो बल्कि अमल हो। और उन जैसे बेशुमार मुजाहिदीन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि हम आज़ाद फिजा में सांस ले सके। आज हम सब खुले आसमान के नीचे आज़ाद जमीन पर खड़े होकर तराने गाते हैं, परचम लहराते हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि आज़ादी सिर्फ जश्न मनाने का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाने का नाम है। याद रखो साथियों,
अगर हम आज़ादी की कद्र ना करें तो वह छिन भी सकती है। आखिर में अपने वतन के लिए यही दुआ है, अल्लाह मेरे वतन को सलामत रखे, हर आसमान से ऊंचा मेरा तिरंगा रखे। I'm Khadija Tulgobra from first year BSc. Today we gather here not just to celebrate 15th August, but to remember the price of freedom. Freedom, a word so simple on the tongue, yet bought with the costliest currency in existence. The blood and lives of our ancestors. The midnight of 14th August 1947 was not an ordinary night. It was the night where the chains of slavery broke after nearly 200 years of domination. And the role of all communities and religion in role of 1857 is no secret. The unity of Hindu-Muslim in 1857 threatened British like never before, and Britishers resorted a policy of divide and rule after that. We owe this movement to countless unsung heroes, men, women, even children who chose death over dishonor. Namely, some freedom fighters were Hyder Ali, Tipu Sultan, Hazrat Maulana Abul Kalam Azad, Hazrat Maulana Hussain Ahmad Madni, Hazrat Maulana Ubaidullah Sindhi, Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Netaji Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmi Bai, Begum Hazrat Mahal, Abrid Kaur, George Joseph, and thousands of unknown warriors. Let us promise today we will be the generation that doesn't just inherit freedom but enriches with selfless attitude and discipline. We will be the citizens who don't just salute the flag but keep it flying higher with our moral values. My dear friends, our tricolor is not just the stripes of color. The saffron is courage of our martyrs. The white is the peace we must protect. The green is the hope that must never fade. And the Ashoka Chakra reminds us keep moving forward because stagnation is the death of progress. Friends, freedom is about waving the flag once is not about waving the flag once a year. It is about taking responsibility to study with sincerity, to work with honesty, to respect one another, and to serve our country in whatever way we can. For the cause of tradition, that not married. And this is remember actually his mother and his duty. And he remember actually Department are relaunching Rida card.
So, what is the meaning of Rida? The meaning of Rida is perfect contentment with God's will or decree, and it is favored by God, something which is favored by God, a virtue representing acceptance of divine will. So, it's a very right name chosen by CMD sir. So we will be starting this Rida card. So the OPD timings for Rida card, if you want to avail Rida card facilities, is from 9 a.m. to 11 a.m. and the charges will be rupees 100. So after 11 a.m. it will be a private OPD and consultants on call like day wise. On Monday it is Dr. Shaista, on Tuesday Dr. Jamila, on Wednesday, Dr. Parveen will be available. On Thursday, Dr. Saira. On Friday, Dr. Pramila. On Saturday, Dr. Munazza. So all 6 days, Monday to Saturday, Rida card from 9 a.m. to 11 a.m. OBG department, and we request all other departments also to join in and continue giving facilities on subsidized rates. Inshallah. जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। क्या है? जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। आगे का लफ्ज बहुत खूबसूरत लिखे हैं अल्लामा इकबाल ने कि सुनने की बहुत बड़ी है। नोटों में भी लिपट कर, नोटों में भी लिपट कर, सोने में सिमट कर, नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर, मरे हैं शख्स कई, मरे हैं शख्स कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। समझ लो क्या भाई? मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता।